So far, we have discussed about the plasmids and the phage vectors. In this lecture, we are going to discuss the other vectors that are used for the cloning of large fragments and also used for the expression of our desired gene. In this lecture, we will discuss about the Cosmid vector, Phagemid or Phasmids vector, artificial vector, shuttle vectors, and expression vectors. Starting with the Cosmids. Cosmids, a Cosmid was first described by Collins and Hohn in 1978. Cosmids are the hybrid DNA molecule. Cosmids are the hybrid vector. The cosmid is the combination of two words, cos, and the mid. Cos is from the cos site of the lambda bacteriophage, and the mid is from the plasmid. When these two, cos site and the plasmid, combine, that will form a structure or the hybrid DNA that is called the cosmid. So DNA cosmid is a hybrid vector in which the cos sites of the lambda bacteriophage combine with the plasmid. It carry more gene of interest than the plasmid and the phage. Cosmids are the vectors possessing the characteristics of both plasmid and bacteriophage lambda. Cosmid के पास प्लाज्मिड और लैम्डा बैक्टीरियोफेज दोनों के कैरेक्टर्स मौजूद हैं. लैम्डा बैक्टीरियोफेज से मेनली वी एक्सट्रैक्ट वी यूज द कॉस साइट. Cosmids can be constructed by adding a fragment of lambda DNA, that is the cos site, to the plasmid. The plasmid part of the cosmids enables them to replicate because it has origin of replication. Plasmid part also help in the selection of the recombinant or the transformant due to the presence of the marker genes. The antibiotic resistant genes are present in the plasmid part of the cosmid. The lambda part, that is the cos sequence, allows them to be packaged in a phage coat and to transduce to a recipient by lambda infecting machinery. जो cos सीक्वेंस या काज पार्ट है या जो काजमिड का लैम्डा पार्ट है उसका जो क्या काम है, उसका काम है कि वो पैकेज करेगा उस पूरे vector को having the desired gene inside the phage coat, and it is responsible for the transfer of that vector inside the host cell by the process of the transduction. No viral particles are formed in the host because it has no genes for viral proteins. Cosmid वेक्टर को इस्तेमाल करने के बाद जब कॉस्मिड में हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर जीन या टारगेट जीन इंसर्ट करेंगे, उससे जब हम उसको ट्रांसड्यूस करेंगे, ट्रांसडक्शन के बाद वायरल पार्टिकल्स फॉर्म नहीं होंगे बिकॉज दिस कॉस्मिड हैज नो वायरल जीन्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ द वायरल प्रोटीन्स. So there is no lysis of the cells. Host cell lysis also absent by in case of the cosmid. स्ट्रक्चर ऑफ द कॉस्मिड. कॉस्मिड हैज ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन. तमाम वेक्टर्स की ये खसूसियत है कि उनमें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का होना जरूरी है. Restriction sites for cleavage and insertion of foreign DNA. Restriction site must be present in the vector. Cosmid के पास restriction sites का होना जरूरी है. Selectable markers from the plasmid. तो cosmid के पास जो selectable markers हैं वो plasmid से आएंगे. ampicillin resistant gene as a selectable marker के तौर पर काम कर रहा है. Cos site, that is the cohesive sequence from the lambda phage. These are a sequence that yield cohesive ends. These are 12 base pair sequence that form the circularization of the cosmid. The classic example of the cosmid vectors are C2RB. Commonly used vector include super cos1. Cosmid having the origin of replication from col E1 plasmid, having the cos site. It enabled in the packaging of this cosmid in the bacteriophage and also in circularization. Polylinkers having multiple cloning sites. इस polylinker जगह पे इस प्लेस पे different sites मौजूद हैं और यहाँ पे हम अपना desired gene insert कर सकते हैं. Antibiotic resistance gene or marker, that is ampicillin resistance gene in case of cosmid. Advantages of using cosmid as a vector. Cosmids have high transformation efficiency and are capable of producing a large number of clones from a small quantity of DNA. मीन इसको ट्रांसफॉर्म करना आसान है, इसके लिए हमने ट्रांसडक्शन का प्रिंसिपल इस्तेमाल करना है. They can carry up to 45 kb of insert compared to 25 kb carried by the plasmid lambda. अगर हम plasmid की बात करें
तो उस केस में हमारे पास सिर्फ 10 केबी तक हम जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर सकते हैं। लैम्डा फेज के जो इंसर्शन लैम्डा फेज है उस केस में हम सिर्फ अप टू 8 to 10 केबी इंसर्ट कर सकते हैं, और रिप्लेसमेंट में हम 25 केबी इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉस्मिड हैविंग द कैपेसिटी ऑफ द टारगेट जीन अप टू 45 केबी। कॉस्मिड्स कैन बी यूज्ड टू बिल्ड जीनोमिक लाइब्रेरी। Disadvantage or limitation of the Cosmids. Cosmids cannot accept more than 50 kb of the insert. 50 kb से ज़्यादा insert is not accepted by the Cosmid. Cosmids are unstable and they are difficult to maintain. These two are the drawbacks of the Cosmids. Phosmids. A phosmid is a kind of Cosmid. Phosmid Cosmid की एक kind है that carries up to 40 kb of insert DNA and cause sites for in vitro bacteriophage lambda packaging. इसके पास cause sites भी हैं और plasmids भी के पार्ट भी मौजूद है, लेकिन difference between the cosmid and phasmid is that the difference between phosmid and cosmid is that the origin of replication of phosmid is derived from the E. coli F factor. Sex प्लाज्मिड से या F फैक्टर का जो सेक्स प्लाज्मिड है उससे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन डिराइव होगा, दैट इज द phosmid. Phasmids are stable single copy vector, whereas cosmids are high copy number, which often leads to deletion or rearrangement of parts of insert DNA. Next vectors are the phagemids. Phagemids are also called the phasmids. इनको हम phasmids भी कह सकते हैं. These are artificially prepared vectors. Phasmids are the combination of plasmid and phage and can function as either one plasmid or phage. ये plasmid और phage दोनों का combination है. ये plasmid और phage दोनों में से किसी एक के लिए के तौर पर भी function कर सकता है. Plasmid अगर हम we want to produce the double stranded segment, then it is used it act as a plasmid. अगर हमने single strand produce करना है तो it act as a phage or the phage like characters. Phasmids contain the F1 origin of replication from F1 phage. F1 phage का origin of replication phasmid में इस्तेमाल हो रहा है. They are generally used as cloning vector in combination with M13 phage. इनको M13 के साथ combination के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. It replicate as a plasmid and gets packaged in the form of the single-stranded DNA in the viral particles. इसकी replication plasmid की तरह है because it has two types of origin of replication. प्लाज्मिड का ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन भी और F1 का या M13 का ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन भी इसके पास मौजूद है. रिप्लिकेट किसकी तरह करेगा? प्लाज्मिड की तरह. लेकिन पैकेज किसकी तरह होगा? दैट इज लाइक द phage vector. Advantages of using phagemids: they contain multiple cloning sites. An inducible Lex gene promoter is present that is used for the selection of blue-white screening. Blue-white cloning selection is observed due to the presence of the Lex gene. Phagmid has two types of origin of replication. Origin of replication from the plasmid and origin of replication from the F1. When we need the double stranded, then plasmid origin of replication will express. When we require the single strand, then the F1 origin of replication will express. Phagmid has selectable markers, antibiotic resistance gene markers are present, intergenic region, code protein sequence, and promoter region, signal peptide region, restriction enzymes recognized sequence that is mainly cut with the Lex gene. Artificial chromosome vectors. For cloning large sequence, for cloning large fragments of the target DNA, we need the more important or more sophisticated type of the vector. For cloning large sequences, we form the artificial cloning vectors or artificial chromosome vectors. These are the bacterial artificial chromosome vectors, yeast artificial chromosome vectors, mammalian artificial chromosome vectors, human artificial chromosome vectors. These having the capacity to carry the larger size than the plasmid, phage vectors, cosmids, and the phagemids. Bacterial artificial chromosome vector. Bacterial artificial chromosome vector, these are similar to the E. coli plasmid vector. They contain origin of replication and genes which encode ORI, origin of replication binding proteins. These proteins are critical for bacterial artificial chromosome replication.
Bacterial artificial chromosome is derived from naturally occurring F plasmid. F plasmid से derive हुए. Bacterial artificial chromosome contains selectable markers and restriction sites like other vectors. Selectable markers भी हैं और restriction sites भी हैं. The DNA insert size varies between 150 to 350 kb. More than the plasmid, more than the phagmid, more than the phage particles, and more than the cosmids. 150 to 350 kb having the insert size. Two genes, par A and par B genes that are required for accurate partitioning during cell division. Par A, par B और साथ par C भी होता है. These are responsible for the division. Rip E for plasmid replication and regulation of copy number. Bacterial artificial chromosome vector. Bacterial artificial chromosome, the first back vector was the pBac108L. Other back vectors are the pBac E3.6, P below-bac 11. The characters are different types of sequences present on the back PCC1, having the par A, par B, and par C genes for the division, and the repeat gene for the copy number multiplication, origin of replication for the replication, and chloramphenicol resistant gene are the selectable marker for back. And leg Z gene having different section sites, and these are other COX sites are also present in the back vector. Leg Z gene for the blue-white screening selection. Advantages of the bacterial artificial chromosome: they are capable of accommodating large sequences without any risk of rearrangement. इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट कैपेसिटी है, जो करेक्टर है, लार्ज सीक्वेंस को क्लोन करते हैं. Bags are frequently used for studies of genetic or infectious disorders. High yield of DNA clones is obtained. The advantage with bacterial artificial chromosome is that the instability problems of egg can be avoided. जो yeast artificial chromosome है उनकी stability ज़्यादा है, उस problem को avoid करने के लिए bags bacterial artificial chromosomes are used. In fact, a major part of the sequencing of human genome has been accomplished by using the library of the Bach recombinant. Human genome library की accomplishment में, उसकी sequencing में Bach और the important vectors. Disadvantages of bags: they are present in low copy number 1 to 2 per cells. Copy number बहुत कम है bags का. In eukaryotic DNA, the eukaryotic DNA inserts with repetitive sequences are structurally unstable in bags, often resulting in deletion or rearrangement. Eukaryotic DNA is unstable in the bag. It may be deleted or rearranged. Yeast artificial chromosome vector. Yeast artificial chromosome vector was introduced in 1987 by M. Olson. A large DNA insert of up to 200 kb can be cloned human DNA. Yeast, in some cases, it may clone 1000 kb. They are used for cloning inside eukaryotic cells. ये eukaryotic cell के लिए cloning vector के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है. These are act as a eukaryotic chromosome inside the host eukaryotic cell. It possesses the yeast telomere at each end. A yeast centromere sequence is present which allows proper segregation during meiosis. Centromere allows the segregation. The origin of replication is bacterial in origin. Bacteria को origin of replication इस्तेमाल हो रहा है. Both yeast and the bacterial cells can be used as a host. तो yeast artificial chromosome के लिए बैक्टीरिया और yeast दोनों host के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं. So we can say yeast artificial chromosome is a shuttle vector. Structure of the yeast artificial chromosome having the telomere sequence and the different restriction enzymes. BMH1 his 3 it is a marker, ure histidine or uracil biosynthesis pathway, ure 3 marker, and BMB1 origin of replication, ampicillin resistant genes, tryptophan pathway, control markers, autonomous replication sequences. इसके पास autonomous replication sequences का होना जरूरी है for its replication. Centromere region, cloning sites having the sub4 gene. This sub4 is mainly it is required in the screening, and it is mainly used red white selection, no blue white, red white. Recombinant will form red colonies.
recombinant will form the red colonies because having the no sub4 gene क्योंकि क्लोनिक साइट्स जहाँ पे मौजूद है, रिस्ट्रिक्शन साइट्स जहाँ पे हैं, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होगी और जहाँ पे हमारा डिजायर जीन आएगा sub4 जीन डिस्टर्ब होगा और आफ्टर द डिस्टर्बेंस इट विल फॉर्म द रेड कॉलोनीज। अगर डिस्टर्ब नहीं हो तो वाइट कॉलोनीज होंगी। सो इट इज यूज फॉर द red white selection instead of blue white selection. Yeast artificial chromosome in the linear form: telomere, yeast replication origin, yeast centromere, clone region of the entire selectable yeast markers जिसमें URA3 है, HIS3 है और TRIP1 है. These are yeast markers and telomere regions at both ends. Advantages of using JAX, yeast artificial chromosomes: a large amount of DNA can be cloned up to 1000 kb. Physical maps of large genomes like the human genome can be constructed. लार्ज जीनोम को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग जेएक्स: ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी इज लो बिकॉज साइज ज्यादा है। द यील्ड ऑफ क्लोन डीएनए इज आल्सो लो, जो क्लोन डीएनए की यील्ड है वो भी कम है। Human artificial chromosome developed in 1997 by H. Willard. Human artificial chromosome is synthetically produced vector DNA possessing the characteristic of human chromosome. इसमें human chromosome के characters मौजूद हैं. It is also artificial synthesized vector. Human artificial chromosome may be considered as a self-replicating microchromosome with a size ranging from 1/10 to 1/5 of a human chromosome. They are used extensively in expression studies and determining the function of human chromosome. Expression studies में और human chromosome की function को determine करने के लिए human artificial chromosome can be used. Advantages of the human artificial chromosomes: it can carry large amounts of DNA inserts. It avoids the possibility of insertional mutagenesis. Human artificial chromosome can carry genes to be introduced into cells in gene therapy. Gene therapy में HEC का बहुत important role है. Viral vectors: several eukaryotic viruses have been employed as cloning vectors for specialized application. For example, human adenovirus, retrovirus are used in gene therapy. Papillomavirus, which also have relatively high capacity for inserted DNA. Baculovirus are used to synthesize important pharmaceutical proteins in the insect cells. Baculovirus, Calimovirus, Tobamovirus, and Geminiviruses have been used for cloning in plants. Some vectors for plants and animals. Plants सेल में प्लाज्मिड जो टी प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम टिमिफिशियन से हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लाज्मिड में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट वेक्टर्स। वायरल में कोलिमोवायरस, मोज़ेक वायरस, जेमिनी वायरस और टोबेमोवायरस हम डिस्कस कर चुके हैं। एनिमल सेल के लिए जो प्लाज्मिड्स हैं वो मेनी वेक्टर्स अवेलेबल कमर्शियली दैट ऑफर यूजिंग सीक्वेंसेस promoter origin of replication from the SV40 or cytomegalovirus. Viral DNA में baculovirus for insect cells, papillomavirus, adenovirus, SV40 and vaccinovirus can be used as a vector for animals. Viral RNA virus में retroviruses use होते हैं and transposons. These are the DNA segments. These are jumping genes. These are called the P elements in the Drosophila melanogaster. Transposons of the Drosophila are called the P elements, and the AC and DS. AC is for the activator and the DS for dissociation elements are the transposon of the maze. Transposon of the maze. AC and DS are the transposon of the maze. So transposon can also be used as a vector in the animals. Shuttle vectors. Shuttle vectors, as the name suggests, that these can move between two hosts. A vector that can express itself or move or clone itself in two different hosts, that type of vector is called shuttle vectors. The plasmid vectors that are specifically designed to replicate in two different hosts that are in the E. coli, in Streptomyces or Scleromyces cerevisiae as well are referred to as shuttle vectors. वो vectors जो दो host में अपने आप को replicate करें, जिसके पास दोनों host के लिए origin of replication मौजूद हो, that is called shuttle vectors. Origin of replication for two hosts are combined in one plasmid. एक ही plasmid में दोनों host के लिए origin of replication होनी जरूरी है shuttle vectors के लिए.
Any foreign DNA fragments introduced into the vectors can be expressed in either host. किसी भी होस्ट में वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है. Shuttle vectors can be grown in one host and then shifted to another host, hence the name shuttle. इसी वजह से इनका नाम शटल रखा गया है कि एक में ग्रो कर सकते हैं, दूसरे में शिफ्ट हो सकते हैं. A good number of eukaryotic vectors are shuttle vector. शटल वेक्टर्स की बहुत ज़्यादा जो नंबर्स हैं वो मौजूद हैं. जिस तरह हमने डिस्कस किया, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स हैं या यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड वेक्टर्स आल्सो शटल वेक्टर. Shuttle vectors are commonly used for transporting genes from one organism to other animals and plant cell. तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जीन को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए शटल वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं. For example, insert a firefly luciferase gene into plasmid and transform agrobacterium. हम प्लाज्मिड में उसको ल्यूसिफरेज जीन को इंसर्ट करेंगे, देन इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू एग्रोबैक्टीरियम, देन ट्रांसफर टू द प्लांट्स. After that, grow agrobacterium in large quantities and infect tobacco plants. ल्यूसिफरेज जीन को हमने प्लाज्मिड में इंसर्ट किया, प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में इंसर्ट किया. अब यही वो एग्रोबैक्टीरियम में वो ग्रो करेगा. उसी एग्रोबैक्टीरियम से उस प्लाज्मिड को हमने किस में ग्रो करना है, उसी से हम उसको ग्रो करना है प्लांट्स में. सो इट इज अ शटल वेक्टर. The shuttle vector that is used for the bacteria and the yeast as well. It has the origin of replication for the bacteria and the selectable markers, that is the antibiotic resistance gene for the bacteria, multiple cloning sites, having the yeast centromere sequence, a leucine biosynthesis gene for selection in yeast, and the yeast origin of replication. As we have discussed, इसके पास दोनों होस्ट के लिए origin of replication मौजूद होनी चाहिए. तो इसके लिए इसके पास yeast origin of replication भी मौजूद है और bacteria origin of replication भी मौजूद है. Resistance gene for antibiotics बैक्टीरिया के लिए मौजूद है और ल्यूसीन दैट इज अ मार्कर फॉर एक्सप्रेशन इन द यीस्ट. सो शटल वेक्टर वो वेक्टर होता है जो दो डिफरेंट होस्ट में अपने आप को एक्सप्रेस कर सके या अपने आप को रिप्लिकेट कर सके. Expression vector. Sometimes the foreign genes in recipient cells may not be expressed. This may be due to following reasons. अब इससे पहले हम जितने भी वेक्टर्स पढ़े ये सारे क्लोनिंग वेक्टर्स हैं. क्लोनिंग वेक्टर्स वो होते हैं जो जीन के अमाउंट को, जीन के नंबर को इंक्रीज करते हैं, जबकि एक्सप्रेशन वेक्टर वो होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, जो जीन को एक्सप्रेस करके मैसेंजर आरएनए बनाते हैं, मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन्स बनती हैं. दीज टाइप ऑफ वेक्टर आर कॉल्ड द एक्सप्रेशन वेक्टर्स. नॉर्मली जो हम क्लोनिंग वेक्टर इस्तेमाल करते हैं उनके पास जो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन डज नॉट अकर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एन इफेक्टर प्रोमोटर. उनके पास प्रोमोटर नहीं है तो वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकते. द इनिशिएशन कोडॉन ऑफ पार्टिकुलर प्रोटीन इज एब्सेंट. इनिशिएशन कोडॉन मौजूद नहीं है इसलिए एक्सप्रेशन नहीं हो रही प्रोटीन्स की. द मैसेंजर आरएनए लैक्स ए सूटेबल शाइन डेल्गानो सीक्वेंस. उसके पास शाइन डेल्गानो सीक्वेंस मौजूद नहीं जहाँ पे राइबोसोम ने आकर अटैच करना है. The vectors which are constructed in such a way that they contain suitable expression signals are called expression vectors. वो vectors जो इस तरीके से बनाए जाएं, जो इस तर्ज पे बनाए जाएं कि उनके पास एक्सप्रेशन सिग्नल्स मौजूद हों, वो ट्रांसक्रिप्शन भी कर सकें, वो ट्रांसलेशन भी कर सकें, मैसेंजर आरएनए भी बना सकें और प्रोटीन भी बना सकें. Their type of vector are called expression vectors. A foreign gene carried by an expression vectors into the recipient cell will have complete expression. जब भी हम एक्सप्रेशन वेक्टर में फॉरेन जीन इंसर्ट करेंगे वो कंप्लीटली वहां पे एक्सप्रेस होगा. फॉर एग्जांपल, द जीन विल बी ट्रांसक्राइब इनटू मैसेंजर आरएनए एंड देन ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन. पहले ट्रांसक्राइब होगा और फिर उसमें उसकी ट्रांसलेशन होगी प्रोटीन्स में. रिक्वायरमेंट्स फॉर एक्सप्रेशन वेक्टर. एक्सप्रेशन वेक्टर में ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन तो सब की रिक्वायरमेंट है, सिलेक्टेबल मार्कर्स भी सब की रिक्वायरमेंट है, यूनिक मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स भी सब क्लोनिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं. ट्रांसक्रिप्शनल प्रोमोटर्स ये बेसिक रिक्वायरमेंट है एक्सप्रेशन वेक्टर की कि वो रीजन जहां पे आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो और ट्रांसक्रिप्शन प्रोमोट हो. ट्रांसलेशन इंसर्शन रीजन्स दैट इज राइबोसोम बाइंडिंग सीक्वेंस मौजूद होने चाहिए और ट्रांसलेशनल टर्मिनेटर्स के जहां से ट्रांसलेशन टर्मिनेट भी करे. दीज आर द यूनिक सीक्वेंसेस, दीज आर यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन वेक्टर्स. Expression vector having the selectable genetic markers for antibiotic resistance gene, origin of replication, very common. Most important sequence are the component of the expression vectors are the ribosome binding sites, transcription termination sequences, and promoter sequences. प्रोमोटर सीक्वेंसेस, ऑपरेटर सीक्वेंसेस, इन सीक्वेंस का होना बहुत जरूरी है. हैविंग द पॉलीलिंकर विद यूनिक साइट्स फॉर सेवरल सेक्शन इनकेस मीन क्लोनिंग साइट्स का होना भी जरूरी है. जीन्स इनकोडिंग रिप्रेसर दैट बाइंड्स ऑपरेटर एंड रेगुलेट्स द प्रोमोटर. So expression vectors have the transcription
termination sequence, promoter sequence, and the ribosome binding sites. PGM3Z in vitro transcription of cloned DNA. PGM3Z is a transcription expression vector. PGM3Z is very similar to PUC8 vector, having the 2750 base pair size. It carries the ampicillin resistance, leg gene resistance gene. The cluster of restriction sites are present in leg Z gene. PGM3Z has two additional short pieces of DNA, each which act as a recognition site for attachment of RNA polymerase enzyme. RNA polymerase enzyme की जो sites मौजूद हैं PGM3Z के पास, so it is a expression vector. These two promoter sequences lie on either side of the cluster of restriction sites used for introduction of new DNA into PGM3Z molecule. The two promoters that are carried by the PGM3Z are specific for the RNA polymerase that are coded by the T7 bacteriophage and for the RNA polymerase of sp6 phage. sp6 phage और T7 bacteriophage दोनों के RNA polymerase के लिए promoters PGM3Z के पास मौजूद हैं. These promoters act as a site for attachment of RNA polymerase, as the function of promoter is to bind or to attach the RNA polymerase. And if the recombinant PGM3Z is mixed with the RNA polymerase, अगर PGM3Z को हम RNA polymerase के साथ mix करेंगे, then the transcription occurs and RNA copies of the clone fragments are synthesized. Transcription होगी और RNA copies जो fragments हैं उनकी synthesize होंगी. These RNA copies can also be used in the synthesis of the cDNA. PGM3Z having the ampicillin resistance gene as a marker, and T7 promoter and sp6 promoter for the binding of sp6 phage RNA polymerase and T7 phage, and this is a leg Z gene responsible for the selection and origin of replication. Application of expression vectors. Expression vectors are used for the construction of expression libraries, the analysis of gene function at protein level, the commercial production of proteins, the production of antibodies for in vivo studies of the proteins. mean एंटीबॉडीज की सिंथेसिस और एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन, प्रोटीन्स की प्रोडक्शन के लिए हमने एक्सप्रेशन वेक्टर्स का इस्तेमाल करना है. Choice of vector. We have discussed a lot of vectors starting from the plasmids and the phage vectors and the cosmid vectors and then the phagemid vectors, artificial chromosome vectors, shuttle vectors and expression vectors. अब इनमें से किस वेक्टर को कब इस्तेमाल करना है? That is the selection of vector. The choice of the vector depends on our insert size, our target gene. Target gene का size कितना है उसके हिसाब से हमने अपने वेक्टर को सिलेक्ट करना है. वेक्टर साइज को भी सामने रखना है कि वेक्टर की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एफिशिएंट हो. रिस्ट्रिक्शन साइट्स शुड बी प्रेजेंट एंड रिस्ट्रिक्शन साइट्स उन एंजाइम्स के लिए हों जो एंजाइम्स अवेलेबल हों. कॉपी नंबर शुड बी हाई, cloning efficiency should be high and ability to screen for insert और जो screening process है वो easy हो. These are the factors on which we select our vector for the insertion of the target gene. These are the comparison of different vectors having different capacities. Standard high copy number plasmid vectors. Plasmid vectors की जो capacity है 0 to 10 kb. Bacteriophage lambda insertion vectors की 0 to 10 kb. Insertion vectors जिसमें हम सिर्फ जो restriction enzyme से कट करते हैं और insert करते हैं, कुछ portion delete होता है. Bacteriophage lambda vector या lambda replacement vector की जो capacity है 9 to 23 kb. समटाइम 24 kb. कॉस्मिड वेक्टर जो हमने डिस्कस किया उसकी जो कैपेसिटी है 30 to 44 kb. बैक्टीरियोफेज P1 हम डिस्कस कर चुके हैं, उसकी जो कैपेसिटी है दैट इज द 70 to 100 kb. और P1 आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स की 130 to 150 kb. बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की कैपेसिटी 300 kb और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स की कैपेसिटी है 0.2 MB मीन 0.2 kb to 2000 kb. तो इस हिसाब से हमने सेलेक्ट करना है कि हमारा जो डिजायर जीन है उसका साइज कितना है और कौन सा वेक्टर हमने इस्तेमाल सेलेक्ट करना है और कौन सा होस्ट हम इस्तेमाल करेंगे, उसके हिसाब से हमने वेक्टर को सिलेक्ट करना होता है. This is a summary of the vectors that we have discussed. Vectors are the carrier molecule, mainly two main types: plasmid vectors, that are the circular DNA molecules having the specially constructed that we have discussed. The PBR322 plasmid हैं,
पक सीरीज वेक्टर्स हैं, प्लाज्मिड वेक्टर्स हैं, और 21 सीरीज वेक्टर्स हैं। उसके अलावा हमने डिस्कस किया टीआई प्लाज्मिड और जीस प्लाज्मिड वेक्टर्स। देन phages, bacteriophages that attack on the virus, on the bacteria, viruses that attack on the bacteria, these are the phages। उसमें lambda phage है, उसमें दो टाइप्स हमने डिस्कस की, इंसर्शन lambda phage वेक्टर्स, उसकी एग्जांपल lambda GT10 और cheron 16A, एंड देन द रिप्लेसमेंट वेक्टर जिसका इंसर्शन साइज 24 KB तक है, उसमें हमने EMBL4 और cheron 40 को डिस्कस किया। एंड अदर phage वेक्टर हैविंग द M13, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, सॉरी सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है जो रिप्लिकेटिव फॉर्म, उसमें हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए वेक्टर के तौर पर, और सिंगल स्टैंडर्ड जो फॉर्म है वो एज ए सीक्वेंस के तौर पर इस्तेमाल होती है। अदर टाइप्स ऑफ वेक्टर जो हमने डिस्कस किया, दैट आर कॉस्मिड, फैजमिड, जीन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, वायरसेस, शटल वेक्टर्स एंड एक्सप्रेशन वेक्टर्स। That's all about the cloning vectors that we have started from the plasmids and finished at the expression vectors. Thank you so much.